Hello and welcome to VLearn. Session 2, Direct and Network Marketing, Direct Marketing. Topic cover: Introduction, Direct Marketing, Direct Mail, Catalog Marketing, Designing the Sales Force, and Commercialization. Introduction. Yes, in this session we will going to discuss about what is direct marketing, how direct marketing is actually useful in the new marketing, and it is considered as a new scenario in a marketing. So yes, direct marketing is one of the fast growing avenue from serving customers. More and more business marketers have turned to the direct mails, telemarketing in response to the higher and increased cost of reaching the business market through a sales force. So we can say that the direct marketing is actually gives a new era and a new concept to the customers, and they were actually working on to bringing out the direct mail concept, the telemarketing concept, just to responding to the higher society or the huge market. Direct marketing, the exact definition of a direct marketing. Direct marketing is basically use of a consumer direct. That is, it is basically kind of in a CD, not exactly that the compact is, but it is a consumer's direct. That means हम जब अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली रीच करते हैं, हमारे जो ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स को हिट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी इंटरमीडिएटर्स इन इट, सो दैट कम्स इनटू द डायरेक्ट मार्केटिंग. So it is basically the use of a consumer direct channel to reach and deliver the goods and services to the customers without using marketing middlemen. As we already state कि किसी भी तरीके के बगैर middlemen के जब हम लोग marketing करते हैं, that comes into the direct marketing. So these channel include direct mail, catalogs, telemarketing, interactive TV sessions, keywords marketing, websites and mobile device. तो ये एक कुछ एग्जाम्पल्स एंड दीज आर द फ्यू, नॉट एग्जैक्टली एग्जाम्पल बट डायरेक्ट मार्केटिंग इन्हीं सब चीज़ों से क्रिएट होती है. क्यूज मार्केटिंग इज़ अ काइंड ऑफ लाइक द पर्सन वॉज वेयरिंग और क्रिएटिंग सम cartoons characters or some kind of the more interesting characters, and they will have a catalogs in their hand, or they can have a pamphlet in their hand and they were selling it. So that comes into the casco market. Whereas the telemarketing is what जब when online sellings होती हैं, that's all telemarketing. Interactive TV sessions is all comes into when there was the direct interaction, that your feedback will be required, your on calls, that's all comes into the interactive TVs. Mobile device is another source of bringing out the exact direct marketing, and catalog and direct mail. So in this session we will going to study all these one by one. Now word of mouth. Word of mouth is yes again a mean of a direct marketing, but exactly not the mean, because these are not the step of taking care by the producer. जितने भी हम लोगों ने अभी डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे डायरेक्ट मेल, कैटलॉग्स, टेली मार्केटिंग, इंटरैक्टिव टीवी, किसको, वेबसाइट, मोबाइल डिवाइस, ये सब ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो एक कंपनी स्टार्ट करती है जस्ट टू ब्रिंग आउट द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. बट येस एट द सेम टाइम word of mouth is not exactly the consumers starting. It is basically started from, or it is kind of in a communication which is basically started by the consumers. So that is why it is a reference to the passing of the information from person to person. So originally the term referred specifically to the oral communication, but now includes any type of human communication. Then what are the various benefits of direct marketing? Direct marketing के क्या क्या benefits होते हैं? The first benefit of direct marketing is it benefit the customers in many ways. Home shopping can be a fun, convenient, hassle-free. It saves time and introduce the consumer to a large selections of the merchandises. जैसे कि yes, home shop is one of the example of the direct marketing. आप टीवी सेशंस में आप टीवी पे देख रहे हैं, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप परचेजिंग इट बाय कॉलिंग देम जस्ट बाय अ सिंगल कॉल, और वो आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं. फ्री टाइम आपका हो जाता है. इट्स काइंड ऑफ अ फन एक्टिविटी जिसके थ्रू आप एक्चुअली कंज्यूमर्स तक रीच कर सकते हो. सो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली, जो हमारे कंज्यूमर्स के टाइम को यूटिलाइज करना है. Direct marketing can be timed to reach the prospect at the right moment and receive the higher readership because it's sent to more interested prospective. We can say that yes, direct marketing is a kind of a huge market reach. जब एक market की बहुत बड़ी reach होती है, in terms of it is that is why it is required to reach on a right time, on a right movement and receive the
हायर रीडरशिप रेटिंग. सो इन दैट केस ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल डायरेक्ट मार्केटिंग होती है. Then, direct marketers can use a number of channels to reach the individual prospective and the customer. Yes, जैसा कि हम लोगों ने इंक्लूडिंग में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो in that case direct marketing is stating that reaching to your prospect customer, but that reaching is not only ऑफ बाय अ सिंगल वे कि आप होम शॉप के थ्रू या टीवी के थ्रू ही अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो. नो, देयर आर मैनी अदर वेज टू रीच टू द कस्टमर, एंड व्हाट दीज वेज आर, दे वर बेसिकली कैन बी अ कैटलॉग मार्केट, they can be e-marketing itself. E-marketing is again a kind of a direct marketing. Then direct marketers can buy a mailing list containing the name, address of almost any group of doctors, engineers, architects, accountants, chief executive of the foreign companies, joint ventures companies, etc. In that terms, marketers जितने भी होते हैं उनके पास एक database cover up और database उनके पास save होता रहता है just to because of taking care of direct marketing. देन नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट मेलिंग. जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि डायरेक्ट मेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. सो डायरेक्ट मेलिंग होता क्या है? डायरेक्ट मेल मार्केटिंग बेसिकली इन्वॉल्व सेंडिंग एन ऑफर, अनाउंसमेंट, रिमाइंडर और अदर आइटम टू दी पर्सन. जब हम किसी भी तरीके की ऑफ़र भेजते हैं या किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट करते हैं या किसी तरीके का रिमाइंडर किसी पर्सन को भेजा जाए, तो दैट्स कम्स इनटू दी डायरेक्ट मेल मार्केटिंग. This is basically using the highly selective mailing list. Direct marketers send out the millions of mail pieces letter, flyers, foldouts. Some direct marketers mail the audio tapes, video tapes, CDs, computer decks to the customers. So in that term, these are what these all are comes into the direct marketers who comes into the picture. Then direct mail may be a paper based and a handle based by the USA Postal Service to telegraphy service or for profit mail carriers such as FedEx, DHL or the Airborne Express. These all comes into the direct mail also. But yes, direct mail जैसा कि ये state किया जाता है, direct mail concept is basically dealing on the concept of a paper delivery or handling of any kind of a postal service or telegraphic service. But yes, they also consider the courier service in it. जैसे कि they considered for the profit mailing there will be FedEx was there as in a company of a courier. DHL is a company of a courier, then Airborne Express is a company of a courier. So that's all comes into the direct mail also. Then catalog market. What exactly the catalog market is? Again a part of a direct marketing. In catalog marketing, companies may send a full line merchandise catalog, specialties customers catalog, business catalog. Many direct marketers have found that combining of a catalog and website can be an effective way to sell it. Catalog, that means it is a kind of a paper which introduce about the company product to the customers. जब कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो कैटलॉग मार्केट में आता है. एंड यस, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डायरेक्ट मार्केटर्स हु हैव फाउंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटलॉग मार्केट. सो कैटलॉग मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव का मार्केट इन अ डायरेक्ट मार्केटिंग. कि कैटलॉग मार्केट अगर आप किसी डायरेक्ट पेज पे भी जाते हो या कहीं भी घूमते हो, तो दे प्रोवाइड यू अ कैटलॉग विच gives you the information about the particular thing. So this is one of the important in the direct marketing. Then now new topic arises, designing the sale force. Direct marketing में जब हम लोगों ने ये concept को पढ़ा कि it is what the reaching to directly to the consumer. Now what was the basic role of a sale force in it? Because sale force are those people, we can say the marketers who were actually performing it. So in terms of yes, हम अगर किसी भी तरीके की डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हैं तो भी वी नीड सम सर्टेन मार्केटर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट को फर्दर सेल आउट करते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट पर फर्दर काम करते हैं. इन दैट टर्म्स द ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए सेल्स कॉल. सेल्स कॉल इज व्हाट when the sale person reach to the customer and introduce the product to the customer, that is comes the sale call. Today most industrial companies rely heavily on the professional sales force to locate the prospectus, develop them into the customers and grow the business. For their hire manufacturer representative and agent to carry out the direct selling task. So this is basically the industrial companies, or this is the
टेक्निक ऑफ द सेल कॉल्स कि जैसे किसी भी प्रोफेशनल सेल फोर्स को एक प्रोस्पेक्टिव लोकेशन पे भेजना, जो एक आपका बिजनेस लोकेशन है वहाँ पर उन्हें भेजना, डेवलप देम कि कस्टमर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कस्टमर से प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, इस तरीके की टेक्निक्स जब उन्हें सिखाई जाती हैं, बिकॉज दे वर द पर्सन हु एक्चुअली गेट इन अ इंटरेक्शन विद द कस्टमर. So therefore, the company need to carefully consider the issue in the Salesforce design, namely the development of a Salesforce object, strategies, structure, size and compensation. So yes, it is required to understand एक Salesforce डिज़ाइन करने के लिए या हमें कितने Salesforce की रिक्वायर्ड है, क्या सेल कॉल होगी हमारी, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एक कंपनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी ऑब्जेक्ट्स बनाना, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर, साइज, कंपनसेशन, ये सब क्रिएट करना एक सेल फोर्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर द परफॉर्मर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द ओवरऑल डिज़ाइनिंग द सेल फोर्स. ये बेसिकली सेल फोर्स डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है कि अगर हमें सेल फोर्स को डिज़ाइन करना है तो व्हाट वी नीड, सबसे पहले हमें सेल फोर्स ऑब्जेक्टिव चाहिए. ये सेल फोर्स ऑब्जेक्टिव लेने के बाद ही वी कम टू नो अबाउट द सेल फोर्स स्ट्रैटेजी कि एग्जैक्टली सेल फोर्स स्ट्रैटेजी क्या है. आफ्टर द सेल फोर्स स्ट्रैटेजी द सेल फोर्स स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी. आफ्टर दैट द सेल फोर्स साइज वॉज रिक्वायर्ड एंड देन सेल फोर्स कंपनसेशन, यानी कि एक डिज़ाइन हमारे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, साइज और कंपनसेशन के बगैर कंप्लीट नहीं होगा. Then now the first sales reps need to know how to diagnose a customer problem and prospect a solution to the salesperson. Show a customer perspective how their company can help our customers improve the profitability. In terms of sales force में sales organization का सबसे पहला काम होता है just to bring out the proper solution. Customer problem क्या है और उस customer problem के solutions क्या होंगे. The specific allocation scheme depends on the kind of a product and the customer, but regardless of a selling context, salesperson will have a one or the more of the following specific tasks to be performed. So in that case, yes, these all are the things जिसके ऊपर हमारे सेल फोर्स डिपेंडेंट होते हैं. लाइक अगर आप कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर को जब तक एक प्रॉपर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट के बारे में उसको पता नहीं होगा, सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो किसी भी तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकता है. So they were the specific task which is required to be performed by the salesperson. So these tasks का सबसे पहले prospecting, that means identifying your prospectors कि कहाँ पर आपके prospective customers हैं, कहाँ वो आपको मिलेंगे, prospective करना. After that, this is targeting. Targeting is a concept कि जो भी आपका prospective location है जहाँ पर आपने अपना business startup करना है, उसमें targeting audience कौन से हैं आपके, उन्हें decide करना. उन्हीं target audience को ध्यान में रखते हुए the company is focusing on the communication part, how they will going to communicate, वो communicate कैसे करेंगे. Then selling part, how they going to sell out. Then servicing, information gathering and allocation. That means you have to work in the servicing part कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करना है, प्रोडक्ट के साथ होने वाली या मिलने वाली जितनी भी सर्विसिंग होती है यू हैव टू प्रोवाइड देम. एट द सेम टाइम द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज बेसिकली जहाँ से आफ्टर दैट यूजिंग योर प्रोडक्ट व्हाट काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन और फीडबैक the person is giving, and then finally the allocating your the new अगर आपने कोई changes किए हैं अपने marketing concept में या sales force concept में तो उसे allocate करना properly. Then after understanding the objectives and then the concept of the objective क्या होता है, another structure is या another topic in this is the structure क्या होता है sales force का. It is basically the strategy has a implication for the sales force structure. A company that sells one product line to one end using industry with a customer in many locations would use a territorial structure. In terms of it is a company that sells one product line to one end using industry with the customer in the different location. जब different locations में एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से सेल आउट किया जाता है, दैट्स कम्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की में कितने सेल फोर्स हैं, किस पोजीशन पर हैं, किस तरीके से हमारा सेल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दैट्स ऑल कम्स इनटू द डिज़ाइनिंग ऑफ द सेल फोर्स स्ट्रक्चर. सो मैनेजेस 4 टाइप ऑफ अ सेल फोर्स. सेल फोर्स 4 तरीके के होंगे. सबसे पहला है अ स्ट्रैटेजिक मार्केट सेल फोर्स कंपोज्ड ऑफ अ टेक्निकल इम्प्लीकेशन एंड क्वालिटी
engineers and service person assigned to the major account. In terms of, yes, this is what bringing out the technical and applications and quality engineers. जब हम लोग क्वालिटी इफेक्टिव और एप्लीकेंट इंजीनियर्स को हायर करते हैं जस्ट टू डिवाइड आवर वर्क प्रॉपरली. सेकेंड इज जोग्राफिक बेसिस पर कर सकते हैं. हम अपने सेल डिस्ट्रीब्यूटर के बेसिस पर सबसे पहला कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास हाईली स्किल्ड वर्कर होंगे उनमें हम अपने काम को डिवाइड करेंगे. दिस कैन बी डिसाइडेड बाय. बट अनदर रीजन इज द जोग्राफिक रीजन. जोग्राफिक सेल फोर्स इज बेसिकली calling on thousands of a customer in the different territory. That means on the basis of a geographic area कि geographic area में ये चीज़ ऐसे कंडक्ट हो रही तो नेक्स्ट geographic area में ऐसे होगी. Then third is a distributor sales force calling on and coaching Motorola distributors etc. In terms of that is bringing out the proper coaching on the distribution part कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे appropriate distribution required होगी ऑर्गेनाइजेशन में. And fourth is an inside sales force doing the telemarketing and taking order via the phone and WhatsApp. Yes, that is bringing out or taking the order on the telemarketing. Telemarketing is just taking the help of the phone, taking the help of a fax. तो वो टेलीमार्केटिंग के अंदर आता है. दैट्स कम इनटू डिजाइनिंग दी सेल फोर्स. स्ट्रक्चर डिसाइड करने के बाद और 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के सोल वी कैन से दैट 4 तरीके के सेल फोर्स स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. नाउ व्हाट इज साइज मैटर इन टर्म्स ऑफ कितने लोग या कितने आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. सो वंस द कंपनी क्लैरिफाइड its strategy and structure, it is ready to consider the sales force size. अगर उन्हें कंपनी के क्लैरिटी है व्यू पॉइंट्स की, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, उस पर अगर एक प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी है एंड ये सेट कंसीडर द सेल फोर्स साइज ऑल्सो, तो उस केस में वो ये डिसाइड कर सकता है कि वन मोस्ट पीपल रिक्वायर्ड इन द कंपनी और नॉट रिक्वायर्ड इन द कंपनी, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल आपको रिक्वायर्ड होते हैं. सो इन दैट टर्म्स इंक्रीजिंग देयर नंबर विल डिक्रीज दी बोथ सेल्स एंड कॉस्ट. और अगर किसी भी तरीके से हमारे नंबर्स के अंदर डिक्रीजिंग होती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी सेल्स और कॉस्ट को बढ़ा देगा, क्योंकि इंक्रीमेंट इन दी प्रोडक्टिविटी इट्स गुड बट इंक्रीमेंट इन दी लेबर इज नॉट गुड. देन sales force compensation. Sales force compensation is basically how much you are paying to your sales force to attract the top quality sales representative. The companies had to develop an attractive compensation package. Sales representative wants a income regulation, extra rewards for the above average performance, and the fair payment for the experience and the longevity. In terms of, yes, they were basically working on the above average performance कि हम एक अब एवरेज से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी. तो हमारे जो मैक्सिमम सेल फोर्स होते हैं वो इसी बिहाफ पर काम करते हैं. सो कंपनी मस्ट डिटरमाइन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रैटेजी फोर्स. दैट्स कंपनसेशन, तो अ फिक्स अमाउंट, अ वेरिएबल अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड द बेनिफिट्स. इन टर्म्स ऑफ, येस, बहुत सारे एक फोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपनसेशन एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फोर्स कंपनसेशन इज फिक्स्ड अमाउंट. एक फिक्स्ड अमाउंट होती है. इफ देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट तो वेरिएबल अमाउंट विल बी देयर. वेरिएबल अमाउंट है तो दैट्स ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर अलाउंस, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, प्लस व्हाट काइंड ऑफ एन बेनिफिट इज कंपनी लुकिंग फॉर, दैट्स इक्वल्स टू द सेल फोर्स कंपनसेशन. देन व्हाट इज कमर्शलाइजेशन. एक कमर्शलाइजेशन बेसिकली होती क्या है. The company will have to coordinate for the manufacturers or builders or rent a full-scale manufacturing facility. So plant size will be critical decision in terms of, that is bringing out or convert the concept of the product or the contract of the companies from one to another thing. So this is what कि plant size को जब अगर किसी तरीके से चेंज करना है या उसमें क्रिटिकल डिसीजन देने हैं तो कुछ उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं जस्ट टू बी ब्रिंग आउट द कमर्शलाइजेशन. First is when, that means timing. In commercialization, a new product market enter timely is critical. That means अगर आप किसी भी तरीके से न्यू प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करते हो तो टाइम ऑटोमेटिकली क्रिटिकल होता है. Then when के बाद there is a where. Where is basically the company must decide whether to launch the new product in a single locality or a region of the several regions.
सो नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट इन टर्म्स ऑफ कि मैं किस लेवल और किस रीजन पे अपने आप को सेटिस्फाई करूँ. डिड आई लिमिटेड टू लोकल और आई मूव टूवर्ड्स द स्टेट पार्ट, देन नेशनल पार्ट एंड देन इंटरनेशनल पार्ट. तो किस तरीके की लोकेशंस हैं जिसमें एक सेल फोर्स अपने आप को इंक्रीमेंट कर सकती है और एक प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन हो सकती है. Then other is to whom. To whom is basically the target market perspective. It is what within the rollout market the company must target its initial distribution and promotion to best prospect group in terms of that is basically rolling out or understanding what is the initial distribution part of the business. To whom that means आपकी targeting customer कौन से हैं, आप अपनी targeting company customers को correctly इस stage पर approach करते हो. Then how that is introduced for introductory market strategy in terms of yes the company must develop an action plan for introducing the new product into the rollout market. That means to bringing out the new concept in the ongoing market. So now yes, there are few questions which you have to do it yourself. First is how to design the sales force, define the direct marketing and catalog market. सेल फोर्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, यू हैव टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ एंड उसकी एक्सप्लेनेशन. एट द सेम टाइम डिफाइन द डायरेक्ट मार्केटिंग इन कैटलॉग मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है और कैटलॉग मार्केटिंग क्या होती है, आपको ये भी डिफाइन करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन. वी आर वाइंडिंग अप हियर. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग. वी लर्न.